Hello students, today again we are taking the same chapter of geography for class 6, chapter number 13, a globe, latitudes and longitude. Today topic is our latitudes and longitude. First we are going to discuss about the latitudes. What are latitudes? Latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. Now suppose this is Earth, this is equator at 0 degree. These are all latitudes. Clear? These are semicircle. These are all latitudes. Again, latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. This is North Pole, this is South Pole, this is equator. It divides Earth into two equal parts, two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. Clear? All these lines in northern hemisphere and these parallel lines in southern hemisphere, these are all important lines of latitudes. All latitudes are drawn parallel to the equator and run west to east. This is east, this is west. All these lines, if you see, these are all parallel to, this is equator. All these lines are parallel, drawn east to west. There are 180 parallels of latitudes in all. जो total होती है सारी parallels of line, these are 180 total. There are 180 parallels of latitude in all, 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere. Total 90 plus equal to 180. All these total in both northern hemisphere and southern hemisphere, they are 180 latitudes, 90 in northern hemisphere, 90 in southern hemisphere. फिर important latitudes. Earlier also in earlier video I have explained the equator at 0 degree, Tropic of Cancer 23.5 degree north, Tropic of Capricorn at 23.5 degree south, Antarctic Circle 66.5 degree south, Arctic Circle 66.5 degree north, North Pole at 90 degree and South Pole also at 90 degree. These are important latitudes. Now again, what is latitudes? Is the angular distance of a place north or south of the equator. North or south of the equator, these all are parallels. There are total 180 latitudes, 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere. All latitudes are drawn parallel to the equator and run west to it. All are parallel. If you see equator, all are parallel. Lines are parallel. Important lines of latitudes are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. These are important parallels of latitudes, of lines of latitude. Now next is longitude. What is longitude? Longitude is the angular distance of a place on the surface of the earth measured in degrees east or west of the prime meridian. When we talk about prime meridian, suppose this is Earth, students. Equator has divided Earth into two equal parts, northern and southern hemisphere. Now prime meridian divides Earth also into two equal parts, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न. ईस्ट एंड वेस्ट, ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को. क्लियर? दिस इज प्राइम मेरिडियन. ईस्ट एंड प्राइम मेरिडियन इज अ longitude. Then we draw these longitudes. These are all longitudes and they meet at
poles. All these longitudes, they meet at poles. Clear? What is longitude? Is the angular distance of a place on the surface of the earth measured in degrees east or west of the prime meridian. Either they are east or west. This is prime meridian, which divides into east and west hemisphere, and east and west are these longitudes. Second, these lines are drawn around the earth from north pole to the south pole. All these, this is north, this is south. These are drawn from north to south pole like this. All they meet at poles. These semicircles, these are all semicircles which meet at poles, north pole and south pole. These semicircles are of equal length. All these are of equal length. Clear? These semicircles are of equal length. They are farthest apart at the equator. इक्वेटर में सबसे दूर होती है लाइंस. क्लियर? इक्वेटर ये है, यहाँ पे सबसे दूर होती है लाइन. अगर आप देखोगे ये यहाँ पे नज़दीक होती जा रही है, फिर यहाँ पे सब दूर. दे आर फादर्स एट apart at the equator and draw closer as they approach poles where they meet. इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर हमारा ये है, इक्वेटर के पास ये लॉन्गिट्यूड्स दूर होती हैं, पर जैसे जैसे ये पोल्स के पास जाती हैं नज़दीक होती जाती हैं और ये सारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मीट करती हैं. देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. टोटल कितनी मेरिडियंस हैं? देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. 180 टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. ये प्राइम मेरिडियन है, 180 इधर है और 180 इधर है. ये ईस्ट, ये वेस्ट. प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में. 180 लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ ये है, 180 लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ है. टोटल 180 इक्वल टू 360. 360 मेरिडियंस होती हैं. दे मीट एट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे. और दूर कहाँ, और ये दूर सबसे ज़्यादा दूर एक दूसरे से कहाँ होती है? इक्वेटर के पास. अगेन, लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन जो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट में. दीज सेमी सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. दीज लाइन्स आर ड्रॉन अराउंड द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनी है और कहाँ मिल रही है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिल रही है लाइन्स आके. These semicircles are of equal length. जो इनकी लेंथ है इक्वल है. They are farthest apart at the equator. सबसे ज़्यादा दूर एक दूसरे से कहाँ होती है? इक्वेटर के पास. और जैसे इक्वेटर से दूर होती जाती हैं, का डिस्टेंस कम होता जाता है और आपस में मिलती हैं कहाँ? ये पोल पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे. They are farthest apart at the equator and draw closer as they approach poles where they meet. और जैसे जैसे पोल्स के पास जाती हैं ये नज़दीक होती जाती हैं, where they सारी मिलती हैं. There are 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. टोटल कितनी मेरिडियंस हैं? 360. 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में. किसके? प्राइम मेरिडियन के. Now read these sentences properly. First is latitude. Latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. Second, all latitudes are drawn parallel to the equator and run west to east. There are total 180 parallels of latitudes. In all, 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere. फिर important lines of latitudes are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. Next is longitude. Longitude is the angular distance of a place on the surface of the earth measured in degrees east or west of the prime meridian. These lines are drawn around the earth from north pole to the south pole. These semicircles are of
equal length. They are farthest apart at the equator and draw closer as they approach poles where they meet. Total, there are 360 meridians of longitude, 180 to the east of prime meridian and 180 to the west of prime meridian.